हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम चैप्टर 1 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो जिसे रीड करने के लिए आपको वीडियो पॉज करना होगा और आंसर्स देखने होंगे। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दे हैव गिवन अस। इसके बाद हमें दिया है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। सो आई हैव मार्क्ड ऑल द आंसर्स। आप आंसर्स देखते जाइए। मैंने सारे आंसर्स को टिक मार्क किया है जो भी करेक्ट आंसर्स हैं। They are total 12 they have given us. So this one is the 10th, 11th and 12th. These are the answers. इसके बाद हमें दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. So here also I have marked all the answers. You can pause the video and see the answers here. 5, 6 and 7. So these are the answers. Then give one word for each of the following. आपको आंसर से वन वर्ड में लिखने हैं. इसके बाद में आता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द अर्थक्वेक अकर्स. तो ये हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आंसर्स हैं. देन आता है आंसर इन वन सेंटेंस ईच. व्हाट आर एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस. देन व्हाट इज अ रिक्टर स्केल. Then third one is what is the focus of hypocenter. Fourth one, what are primary waves, what are secondary waves, what are surface waves, what are plates, what do you mean by an epicenter. Explain orogenic movements. What is folding. Define fault. What is a block mountain. What is a rift valley. Explain the process of volcanic eruption. Question 3 का B, identify and name the internal movements. So tsunamis are generated in coastal areas. These are the answers they have given us. You can pause the video and write all the answers. इसके बाद हमें दिया है distinguish between. First is block mountain and fold mountains. Then second हमें दिया है primary seismic waves and the secondary seismic waves. Total 6 points they have given us. So you can pause the video and write the answers. थर्ड वन इज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. आपको और किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए. उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी. देन फोर्थ है सेस्मिक फोकस हाइपोसेंटर एंड एपीसेंटर.
Then fifth one is central type volcano, fissure type volcano. Then the sixth one, orogenic movements, epirogenic movements. Then seventh thing, slow internal movements, sudden internal movements. Then show the following in the given outline map. Then give geographical reasons are here. First one, building collapsed at the foothills of the Himalayas because of the earthquake. Before collapsing, they were moving forward and backward. So this is the answer. You can pause the video and write it. इसके बाद में आता है there is a difference in the formation of the Meghalaya plateau and Deccan plateau. So this is the answer. वीडियो पॉज करके आप आंसर देखिए. इसके बाद में आता है थर्ड वन, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज. Then fourth, the barren island is becoming conical in shape. Then fifth one, volcanic eruptions can cause earthquakes. Then sixth one, the secondary earthquake waves are very destructive. Then show the epicenter, focus and the primary, secondary and surface waves of an earthquake with the help of a neat labeled diagram. So this is the diagram here. Then question 7 is answered in brief. Give reasons why an earthquake occurs. Then which type of movements have led to the formation of the major fold mountains in the world? Then how is the magnitude of the earthquake related to collapsing of houses? Then fourth one, what are the effects of earthquake on the earth's surface and human life? So answers are given in points here. Fifth one, explain the types of volcanoes on the basis of periodicity of eruption, giving examples. So first is active volcanoes, then dormant volcanoes, third is extinct volcanoes. इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, explain the types of seismic waves. So first is primary or P waves. Then second is secondary or S waves. Then surface or L waves. Then question number 7, explain the types of volcanoes on the basis of their type of eruption with example. First is central type or conical volcano.
Second is fissure type volcanoes. इसके बाद में क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द surface of the earth due to the movements taking place in the interior of the earth. Fold mountains. Second point is block mountains. Third point is rift valley. Fourth is plateau or continent. Then question number 9, how are continents and extensive plateaus formed? Pause the video and write the answer. Then हम जाते हैं what are the effects of volcanoes की तरफ. फर्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट एंड उसके बाद दिया है पॉजिटिव इफेक्ट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. See the diagram. Effects of tension block mountains. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली. Pause the video and write the answer. This is a diagram of the rift valley. And next is read the following news, observe the photograph and answer the questions. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. So these are the questions based on the news. इसके बाद है रेफर द मैप ऑन द पेज नंबर 18 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो दिस इज द मैप दे हैव गिवन अस. इसके बाद में हमें दिया है आंसर्स बेस्ड ऑन दिस. Examine the plate boundaries in the given map and write the names of the plates. Then on which side of the continents of North and South America are the earthquake prone zones located? Which mountains are located there? Third question, in which mountain zone is Asia does the earthquake prone zone lie? Question number 4, in which region are the volcanoes concentrated in Africa? What could be the reason? Fifth one, correlate earthquake regions, distribution of volcanoes and plate boundaries. वजह इसी के साथ में हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.